atomic structure. I'm going to talk about the atomic structure now. So the atomic structure is basically composed of the atom is made up of protons, neutrons, and electrons, right? So the atom, a simple atom, is made up of protons. You have a nucleus. This is the nucleus. It consists of protons and neutrons. There are protons and there are neutrons inside the nucleus, and the surrounding has electrons which are in electronic shells, right? These are the electrons. आपको यहाँ पे electrons नजर आएंगे, right? So these are the electrons. So the atoms of all elements are made up of three particles called protons, neutrons, and electrons. The nucleus contains the protons and neutrons, and it is at the center of the atom. This is basically an atom. This is the structure of an atom. So this is the nucleus, right? And nucleus consists of both protons and neutrons. And these are the electrons, right? So the protons and neutrons are at the center of the nucleus of an atom, are at the center or are at the center or and in the nucleus of the atom, right? The nucleus of the atom. And the electrons, they orbit the nucleus. The electrons are orbiting the nucleus. Is that clear, boys? जी, सबको क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूविंग ऑन, आपके पास, let's talk about the mass of the proton, neutron. Let's talk about the charge of the proton, neutron, electron first. So I'm going to talk about the charge of each of them. The charge. So this is the electron, the proton, and the neutron. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है एनीवन? क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव 1, राइट? एलिमेंट्री चार्ज अगर आपका है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव 1 लेते हैं आप, पॉजिटिव 1 ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? -1 नेगेटिव 1, वेरी गुड। -1। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 0। दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज दैट यू हैव। प्रोटॉन का पॉजिटिव 1 है ऑफ, अगर आप 1 को, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम से, in order to find the real charge. This is the elementary charge. आप कंपेयर कर रहे हैं इनको आपस में. This is +1, this is -1, and neutron has 0. ठीक है? तो ये आपके पास, और इनकी पोजीशन क्या होती है? प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस, it's in the nucleus. Electron is orbiting the nucleus, and neutron is also in the nucleus. अब आपके पास एटम जो होता है वो अनचार्ज क्यों होता है? Why the atom is uncharged? Any idea? Why the atom is uncharged? Sir, because the number of protons are equal to the number of electrons, so they cut out Very each good. other. Very good, excellent. न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, the number of protons और electrons equal होते हैं, तो it is uncharged. लेकिन अगर वो आयोनाइज होगा, इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. ठीक है? आयोनाइजेशन में क्या होता है?
आपको पता है ना आयन कैसे बनता है? जब आपके पास Yes, you sir. lose electrons or you gain electrons, you form an ion, right? So forming an ion is basically, if it is a positive ion, there is a loss of electrons, and if it is a negative ion, there is a gain of electrons. This is known as ionization. ठीक है? तो इस तरह से आपके पास आयन्स बन जाते हैं. एक न्यूट्रल एटम के अंदर आयन्स नहीं होते. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ atoms and ions, right? So atoms are uncharged because they contain equal number of protons and electrons. They contain equal number of protons and electrons. And the charge on the electron is equal and opposite to that of the proton. And the charge, ये सबको समझ आ रही है? शाहजेब आपको भी क्लियर हो रहा है? बाकियों को सबको? ज़हीम, अफराज मेरा किधर है सारे? Where are they? Afnan, is that clear to all of you? Yes, sir. So atoms are uncharged because they contain Yes, equal sir. number of बिल्कुल clear. protons and electrons, and the charge on and the charge on an electron is equal and opposite to the charge on proton. Okay. What happens when an atom loses some electrons? ठीक है, जब आपके पास ions, जब electrons lose हो जाएंगे तो क्या होगा? It becomes an ion. The atom becomes an ion. So what happens if an atom loses one or more electrons so that it does not contain equal number of protons and electrons? It becomes charged and it is called an ion, right? So there are some positive ions, there are some negative ions. If it gains an electron, it becomes a negative ion, right? तो how does ये ion का सवाल आ सकता है पेपर में कि ion बन गया तो क्या होगा? तो ion बन गया तो आपके पास number of electrons protons की equal नहीं रहे. आपके पास या तो deficiency of electrons हो जाएगी या आपके पास electrons बढ़ जाएंगे, right? So I'm going to write here, if an atom formation of an ion, if an atom loses, Yeah. जी बताएं, or gains one or more electrons, it forms सर, an ion. एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है. क्या जी इस रेडियो एक्टिव वाली चैप्टर के अंदर आइसोटॉप्स वगैरह का कोई काम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम करेंगे, अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मैंने अभी आपको सिलेबस जब दिखाया था उसमें था आइसोटोप. बिल्कुल है. अच्छा, सॉरी, मैंने वो से नहीं देखा. सही हो गया. थैंक यू. ठीक है, it forms an ion, right? So now it does not have an equal number of electrons and protons. So now the atom does not have equal number of protons or electrons, right? So now it has become an ion. ठीक है, right? Negative ion तब बनता है जब वो gain करता है electron, और positive ion तब बनता है जब there is a loss of electrons. So positive ion when there is loss of electrons, and negative ions जब आपके पास electrons protons से ज्यादा हो जाएंगे, when there is gain of electrons. Is that clear? जी सबको clear है everyone?
Let's talk about the proton number and the nucleon number. Let's talk about the proton number and the nucleon number. Proton number क्या होता है? Anyone, any idea what is the proton number? What is a proton number? Number of protons. Present in an atom. Yes, the number of protons in the nucleus of an atom is called the proton number or atomic number. We represent it with Z. हम उसको Z से represent करते हैं. The number of protons in the nucleus of an atom is called the proton number. And we represent it with the number Z. हम इसको Z से represent करते हैं. इसको हम Z कहते हैं proton number को. इसकी notation है. ठीक है, proton number, or it is also known as atomic number. I'm going to write here proton number or atomic number. Let me write it with atomic number. सर जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर इनकी यानी प्लेसेस बार बार स्विच होती रहती हैं. कभी प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखा होता है, कभी मास नंबर ऊपर लिखा होता है. तो हमें कैसे पता चलेगा? अब याद करना पड़ेगा हमें तो कि कौन सी पोजीशन. शुरू में आपको की दी होती है. मैं अभी आपको नोटेशन बताऊंगा ना, तो उसमें आपके पास आपको की दी होगी. फिजिक्स के अंदर जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो इस तरह से है. फिजिक्स में वो सिलेबस में ऊपर आपको दिया हुआ न्यूक्लियन नंबर, नीचे आपको प्रोटॉन नंबर दिया हुआ. तो क्या केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है? केमिस्ट्री के सिलेबस में भी यही होगा. उसमें हो सकता है कि ऊपर प्रोटॉन नंबर को दे दियो. दैट डजंट. बड़ा होता है वो न्यूक्लियन नंबर होता है और जो छोटा होता है प्रोटॉन. इस तरह याद ऑब्वियसली इस तरह याद कर ले. इस तरह याद कर ले. ये देखें, जस्ट अ मिनट. ये देखें, explain the term nuclide and use the nuclide notation XAZ. अब ये A जो है ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, उसने ऊपर बता दिया, और Z आपका न्यूक्लियन नंबर है. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया यहां पे. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो Z इज योर एटॉमिक नंबर, राइट, एंड A इज योर न्यूक्लियन नंबर. ठीक है, दैट इज द मास नंबर, राइट.